Travel with Tony. The Wall of Death, also known as the Well of Death, must be one of the scariest circus acts to be part of. Motorcyclists and car drivers drive their vehicles inside a cylindrical, near vertical wall, seemingly ignoring the basic laws of gravity. The first circus act involving these near vertical walls took place in the early 1900s at the Coney Island Amusement Park in New York. From there it spread to different countries around the world. Over the years, this attraction died a slow death, and nowadays it can only be seen in India, where stuntmen ride inside the so-called Well of Death at breakneck speeds without any safety gear. The well is built out of salvaged wood and does not appear to be safe at all. It's a daredevil stunt, and the guys performing are risking their lives, that too not getting much in return with regard to monetary terms. Daredevilry at its best, Maut Kuan, aka the Well of Death, used to be very common attraction at fairs and exhibitions across Indian villages. Having become almost extinct, I came across this fair in the festival of Ganesh Chaturthi in Vashi, Navi Mumbai, that is a part in India, and did not want to miss an opportunity in videographing and documenting this phenomenal show of guts, adrenaline and daredevilry, something the younger generation might never get an opportunity to see. मौत का कुआं, अभी आपने देखा जो मैंने यहाँ से वीडियो फुटेज लिए थे हम लोगों ने। कितनी गाड़ियाँ हैं यहाँ पे? टोटल अभी 5 मारुति, 11 गाड़ी, 6 बाइक, 5 मारुति गाड़ियाँ हैं और 6 बाइक्स हैं। हाँ, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे काफ़ी कारें और काफ़ी मोटर बाइक्स ये मौत के कुएं में चलाते हैं। एज भी ज़्यादा नहीं है। कितनी एज होगी आप लोगों में? 22-25 के बीच में सब? 22-25 के बीच में द एज वेरिएशन इज 22, इन बिटवीन 22 एंड 25, बट द गेम्स विच दे प्ले, आप मोटरसाइकिल की आवाज़ सुन रहे हैं ना, ये मौत के कुएं में जो मोटरसाइकिल चलती है उसकी आवाज़ है। Daredevil drivers keep a car on track, firmly driving along to the wall of the well. The Maut ka Kuan has been in existence for about 35 years, but the use of cars in the Kuan was started 11 years ago. Some of us witnessed the performance of Pakistani and Indian daredevils in cars and soon enough adopted it. Revving up the engine of his perfectly tuned cars, stuntmen denied having any knowledge about gravitational, centrifugal or centripetal forces. They keep watching one another and increase or decrease their speeds. During the further interaction with these stuntmen, they revealed that they feel comfortable between the speeds of 60 and 70 km per hour. That way they are stuck to the walls firmly and find sufficient time to veer when needed.
They say that the performance is called Well of Death. Death is always beside us. However, it is the grace of God that we are still alive. तो मैंने देखा कि आप कार से बाहर, कार में कौन था? आप थे? आप तो मतलब स्टीयरिंग छोड़ के कार से बाहर ही आ गए थे। चलती कार में बाहर आ जाते हो तो एक्सीलेटर पे पैर रखा था आपने? एक्सीलेटर पे पैर और स्टीयरिंग पे भी पैर। अच्छा, एक्सीलेटर भी पैर से चला रहे थे और स्टीयरिंग भी? ब्रेक वगैरह नहीं लगाते ना? रनिंग में ब्रेक नहीं था। रनिंग में ब्रेक नहीं लगा क्योंकि वो पीछे वाले आपके प्रॉब्लम हो जाएगा वाले भी। और फिर ब्रेक से क्या है कि गाड़ी गिर जाती है। गाड़ी गिर जाती है। तो आप ये कितने सालों से करके आ रहे हैं? मेरे तो 18 सालों के मैक्सिमम। 15-18 सालों से इसी लाइन है। मतलब आप जब छोटे थे तब से? कभी एक्सीडेंट वगैरह हुआ है? हाँ हुआ ना। तो भगवान ना करे एक्चुअली कभी ये समझो शो के टाइम पे गिरी, कभी गिरी है? गिर जाती है, चलती है, कहीं मारते जाते हैं। नाम ही इतना डेंजर है। मौत का कुआं नाम ही डेंजर है, तो डेंजर करतब दिखाते हो आप लोग। यार आपकी उम्र तो बहुत छोटी लग रही है, बहुत छोटे हैं आप यार। ये तो बहुत छोटे से गाड़ी चलाता था, तभी इतना बड़ा हो गया। अच्छा, तो आपके घर वाले कुछ बोलते नहीं है क्या? इतना खतरनाक खेल खेल के आप लोग? हाँ, कभी डर नहीं लगता है थोड़ा सा भी? ड्राइविंग में क्योंकि प्रैक्टिस हो जाती है। हाँ प्रैक्टिस है, लेकिन यार ये तो बहुत खतरनाक है, बहुत ही रिस्की काम है ये। रिस्की है जब तो है ना? रिस्क किस चीज़ में नहीं, आजकल हर चीज़ में रिस्क है। आप रोड पे जा रहे हो, कोई ठोक देगा, उसमें भी रिस्क है। ये तो है। खैर आपके जिगर की दाद देनी पड़ेगी, आपका जो जिगर है वो तो मानना पड़ेगा यार। क्योंकि मैं ऊपर से शूट कर रहा था बैठ के, तो आप मेरे कैमरा के नज़दीक से गुजर जाते थे तो मैं हिल जाता था, मेरे को डर लग रहा था। अभी मैं यहाँ पे खड़े रह के शूट कर रहा हूँ तो मुझे भी डर लगता है कि यार आपकी कार मेरे कैमरा के सामने से गुजर जाती है। बैठ के देखिए, आपको बैठा के दिखा देंगे। नहीं यार, कमाल है। आपको तो मैं सच्चे दिल से सैल्यूट करता हूँ यार। काफ़ी इतनी छोटी उम्र में इतना खतरनाक करतब दिखाते आप। ठीक है, कार तो ऐसे चला रहे हो, उस कार से बाहर निकल के आप लोग बड़ा कमाल कर रहे हैं यार। और ये मोटरसाइकिल कौन चला रहा था? आप ही चला रहे थे? आप तो मोटरसाइकिल के ऊपर खड़े हो गए थे ना? इसमें सीखने में ना बहुत फर्क लगता है। इसमें सीखने में ना जान अपना हथेली में रखना पड़ता है। हाँ, जान तो हथेली पे रखना पड़ेगा यार आपका। तो अपना जान अपना हथेली में रखना। फिर मोटरसाइकिल के ऊपर खड़े रह के आप करतब दिखाते हो यार। ये पता है, जैसा 6 मोटरसाइकिल घुमाता है, कोई तो 3 तो घुमाता है। हाँ, 6 मोटरसाइकिल 4-5 मारुति कार घुमाता है। इस हिसाब से बनाया गया है। मैक्सिमम इसमें 20 गाड़ियाँ रनिंग वन टाइम। अच्छा, ये बनाया है इस स्टाइल से कि मैक्सिमम 20 गाड़ियाँ? 10 मारुति कार 10 बाइक आराम से चल सकते। अच्छा, 10 बाइक्स 10 मारुति कार। यार कमाल है। तो एट अ टाइम सब कर चलती दें? भी है। कुछ राइडर लोग जो हमारे साथ हैं, हाँ, घर पे गए हुए हैं, बीच की छुट्टियाँ वगैरह थी, अच्छा। तो इसलिए वो आ नहीं सके। तो आपका मेला मतलब पूरे महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में चलता रहता है? अच्छा, तो आप लोगों का काम ही यही है, रोजी रोटी भी यही है, शौक भी यही है, सब कुछ यही है, सब यही है आपका? अच्छा, ये आपके सेठ जी हैं? अच्छा जी, हेलो भाई। आपके लड़कों को तो यार, और आपको भी दाद देनी चाहिए, इतना खतरनाक खेल खेलते हैं आप। यहाँ ये ज़रा कैमरा में आ जाइए। आपका नाम? मोहम्मद भाई। अच्छा, तो आप पहले आप भी यही चलाते थे क्या? ये भी राइडर हैं। अच्छा, आप उस्ताद हैं? राइडिंग में। अच्छा, आपने सिखाया क्या इनको सबको? नहीं, इनके बच्चे ही हैं। अच्छा, आप इनके बच्चे ही हैं सब, मतलब मास्टर आप भी हैं? अच्छा अच्छा, तो अभी आप नहीं चलाते हैं? ऑनर हो गए तो बाई चांस बच्चे चला रहे हैं तो फिर बड़ा इधर उधर होने से तकलीफ। अच्छा, आप भी चलाते हैं?
नहीं तो अभी आप बैक सीट मतलब सुपरवाइज करते रहते हैं। यार है कमाल का ये मौत का कुआं वाकई में। चलिए एक बार और करतब दिखाइए। हाँ, मैं यहीं से शूट कर लेता हूँ। हाँ, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द बेस्ट टू यू। Derived directly from United States motorcycle broad track, that is motordrome racing in the early 1900s, the very first carnival motordrome appeared at Coney Island Amusement Park, that is in New York, in 1911. The following year, portable tracks began to appear on traveling carnivals, and in 1915 the first cylindrums with vertical walls appeared and were soon dubbed as the Wall of Death. The carnival attraction became a staple in the United States outdoor entertainment industry, with the phenomenon reaching its zenith in the 1930s with more than 100 motordromes on traveling shows and in amusement parks. The Well of Death Motordrome, Cylindrome or Well of Death aka Maut ka Kuan is carnival sideshow featuring a silo or barrel shaped wooden cylinder ranging from 20 to 36 feet in diameter, inside which motorcyclists or the drivers of miniature automobiles travel along the vertical wall and perform stunts held in place by centripetal force.
The audience views from top of the drum looking down. The drivers start at the bottom of the drum in the center and ascend an initial ramped section until they gain enough speed to drive horizontally to the floor, usually in a counter-clockwise direction. Wall of Death performances have appeared in various national and international movies.